थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। सो हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अपने लाइफ में आया। आपके लाइफ में कैसे आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मेरे लाइफ में यूं आया कि सडनली बाय चांस मैंने डिस्कवर किया वो पिरामिड, राइट? स्टीवेंसन या किसी का, लेट मी गूगल गूगल कर लेते हैं वाइब्रेशन वाला पिरामिड देखने के लिए। वाइब्रेशनल पिरामिड या फनल, कुछ भी हो। फनल बोल सकते हैं उसको, वाइब्रेशनल फनल। सो इट वाज वाइब्रेशनल फनल एंड इट वाज बाय कौन? बहुत सारे लोगों ने, मैनी पीपल हैव डिस्कवर्ड, बहुत सारे लोगों ने इसको किया है। एंड पहले किसने किया, किसने भी किया हो ये, अगर आप वाइब्रेशनल फनल करके अगर आप गूगल करते हैं तो ये दिख जाता है। और इसमें सबसे कंपटीशन है, इंटेलिजेंस है, और ये सब सब लेस देन 100 में है। इवन आइंस्टाइन का जो लेवल था वो 34 पे था। तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि तो हायर अप में क्या होता है? तो हायर अप में आपके इंटेलिजेंस कोई काम नहीं आता, आपका आपकी बुद्धि कितनी है नहीं काम आता। वहां पे काम आता है सिर्फ एक चीज की, आप कितने खुश हो। तो कितने खुश हो आप, राइट? तो फिर ये एक की है ना, ओनली आपको खुश होना है, सम उसी से आपका काम हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ही लगा कि ये तो अपने हाथ में है, राइट, खुश होना। बट आप सोचो, क्या आप खुश होते हो? आपके हाथ में नहीं है आपकी खुशी। कई सारे लोग सोचते हैं कि वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि या तो ये नहीं हुआ या तो फिर किसी और ने कुछ कर दिया, इस तरह से। अगर आप बहुत क्लोजली देखोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई और आपको खुश होने से रोक नहीं सकता है। उसने भले ही कुछ कर दिया हो जिससे आपका मन दुखी हो, बट आप दुखी होते ही क्यों हो? या आपने सोचा क्यों दुखी होते हो? इसलिए दुखी होते हो क्योंकि आप उनका रिस्पेक्ट करते हो और उनका ओपिनियन आपको मैटर करता है। अब जब आपका ओपिनियन उनको नहीं मैटर करता है, या फिर आप खुश होंगे या दुखी होंगे इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके झगड़ा ही कर लो, कोई जरूरी नहीं। तो बंदे को करने दीजिए ना जो करता है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे लिए भी आसान नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि मुझे आ गया है और मैं ज्ञान बांट रही, नहीं। मुझे भी तकलीफ होती है कई बार, लेकिन थोड़ा सोचने से फिर मुझे पता चलता है कि वो दूसरे बंदे का ओपिनियन क्या है, उससे मुझे क्या, राइट? तो फिर फिर मैंने सोचा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुश होने से आता है, और फिर क्या करें उसका। तो ये जो बंदे हैं जिन्होंने ये आपको आपको बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उन्होंने 30 एक्सरसाइजेस दिए। तो आज हम पहला एक्सरसाइज करेंगे, राइट? आज करेंगे। आज जानते हैं कुछ हुआ, आज मेरे दिमाग में आया सुबह कि सरेंडर किए, कि होता है ठीक है, नहीं होता है ठीक है। और मैंने एक एक्सरसाइज शुरू किया। वाइस प्रेसिडेंट किसी और, मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ,
मुझे किसी कहीं और में भी वाइस प्रेसिडेंट बनना है, देन उनका जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल से मेरा क्या मैचिंग है। ऑफ कोर्स वो जो करते हैं वो मैं नहीं करती, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाके आपने क्या किया है पहले वो मैटर नहीं करता है, आप कैसे आगे जाके उसको हैंडल करोगे अपने एक्सपीरियंस को, वो मैटर करता है। तो आज मैंने लिखना शुरू किया, एक्चुअली मैच करना शुरू किया, क्योंकि मैं अपने कोर्स में मतलब अभी जो लोगों को मैं सपोर्ट करूंगी उनका जो भी रेज्यूमे है और वो जिस भी लेवल पे जाना चाहते हैं उस लेवल का मैच करना। अगर नहीं है मैच तो देन मुझे पढ़ाना है उनको हाउ टू मैच। उसमें थोड़े से बेसिक कुछ चीजें हैं, वो ये है कि आप जो सोचते हो और उस तरफ आप अगर काम करने लगे हो, अभी आपका एक्सपीरियंस हो चाहे नहीं हो, वो आपका हो जाएगा बिकॉज यू थिंक योर सेल्फ, क्योंकि आप वो वाइब्रेशन में आ गए। तो चलिए वो एक्सरसाइज करके देखो, राइट। क्या हम कर पाएंगे वो एक्सरसाइजेज जो यहाँ पे है। जस्ट मुझे करने दीजिए। मुझे लगा कि मैंने ये खरीदा। एनीवेज हम कुछ और कर लेंगे, राइट। प्लीज वेट फॉर सम टाइम।
हाई टिकट सेलिंग देखी भाई टिकट सेलिंग देखी हाई टिकट सेलिंग कैसे करें आप? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिला के हम करते हैं. At our office, we call Dan script the Rolls-Royce method to closing high ticket. And here is why. Rolls-Royce is known for dialed-in engineering, so their vehicles run perfectly with such detail and effort. Why wouldn't you use the best tactics and strategy from an expert who has truly created a massive masterpiece? We have used Dan's script to go from struggling to hit $30,000 per month to now having multiple six-figure months to bringing in millions per year. So start करते हैं. A 12-page sales script you can use to sell millions over the phone. कैसे करें उसको? आप कैसे सीख सकते हो इसको वो देख लेते. Before I became an 8-figure earner, a WSJ best-selling author, and a real estate investor, I was delivering pizzas as a college dropout. I grew up in a small Florida town as an only child. My home was not a happy one. I'll often recall holidays and birthdays where they would scream and throw things at each other. On multiple occasions, the police were even called. I love my mother and father, and they are great when they are apart, but they were not so great together. Since I had no siblings, it was challenging for me to integrate into the school system. I didn't know how to interact with other children, and as a result, I get bullied incessantly. With very few friends, I didn't get invited to many parties. That means I had a lot of time to read. I became obsessed with reading and learned many skills I knew I could show others and help them. But no one ever took me seriously, let alone actually listen to me. And so I never got to share those amazing things I learned. Have you ever felt you had something amazing to share that could help people, but no one would listen to you? It's a horrible feeling. This is why when I go to conferences and people recognize me, I always take time to talk to them and take a picture because I know what it feels like to be ignored. And I don't want to make anyone feel that way. Eventually, my father considered pulling me out of school in my first close ever. I convinced him to let me enroll in a homeschooling program where I could complete high school through a self-education program. My grades were so good that I qualified for a program where my parents didn't even have to tutor me. I could read the materials myself and then take the test. While this solved the problem of getting bullied at school, it perpetuated my problem of having limited social skills. To be a great salesperson, wouldn't you agree that the number one thing you need to have is social skills? I think you would, but I didn't have that. Yet,
Here I am today, one of the highest selling online entrepreneurs in the world. This is because I learned a skill that only helped me make millions selling my own product. But that product was the very thing people never wanted from me entire life. My advice. I sold $30 million worth of my own consulting, coaching, and seminars. The skills that made that possible was the skill of selling. Journey to learning that skill began one fateful day when I responded to a Craigslist ad. The ad offered $50,000 per year or more to be a traveling salesperson, selling at stores like Costco and Sam's Club. They made it clear that they required at least 5 years of sales experience. Before this, I had been delivering pizza for 7 years straight. Although most people deliver pizza for a couple of years, I was on my way delivering for a decade. I was over it. I needed something new. I needed a way to break free. So even though I didn't have 5 years of sales experience, I applied anyway and said I had the experience. It was one of the few times I had been dishonest in my life, but my desperation clouded my judgment. By some miracle, I passed the phone interview and they flew me up to New Jersey for 2 weeks of training. Wow. I have read this, I think.